Good day, folks. A new week. When you look at the newspaper Sunday, cheers, good coffee, cheers, Sunday, Monday, all you see is absolute bankruptcy of ideas as far as the BJP is concerned. Whether in UP, whether at the center, whether it is Shah, whether it is the Prime Minister, whether it's Yogi, whether it's Nada, whether it's maybe Rajnath Singh is now coming out a little bit more toward to being a little bit more balanced. But these four guys, Nada, whether you can hear, I'm going to read some of the stuff out as I'm seeing. But the important part, poll curbs may be eased as EC to review ban on rallies today. Government silent. Minister General VK Singh says NYT Supari media. Guess, folks, this is General VK Singh, the man who started the downslide of the armed forces into politicization. A man who now seems absolutely clueless of what he says, what he does. Does he actually, but maybe he is just a Russian cloaked commie. Who knows, right? Fresh plea urges SC to take note of NYT report on Pegasus issue. Absolutely. Pegasus sale, government hid facts. SC should step in, says opposition. TMC Congress I joint plan for second half of session. And this is important, folks. They have to be together and nail the government on Pegasus because it is absolutely critical for this country. And yeah, it could be treason, right? And secondly, they must go after the Berozgari and the unemployment. They must bring up the student issues in Bihar and the way, and especially the exams, the way they're all furjoed out in UP. It's unbelievable. Shows corruption, corruption in boo shops in UP, corruption in COVID call, corruption in irrigation department, corruption in Jal Shakti. It is corruption right across, folks. So, when this happens, BJP brought growth, others promise fake freebies, says Shah. Akhilesh promises Narega like law in urban areas, meals at rupees 10. Akhilesh accepts Shah's dare to debate on law and order. And Gujarat in for surprise results, not UP, says Akhilesh. He's thrown down the gauntlet. And when you see the Gujarat model with everybody fleeing to America, we know what Shah and Modi have been up to. Cornering all the money, leaving nothing for the poor, leaving nothing for the middle class, nothing there in Gujarat. Secondly, when you talk about development and Shah, I'm a big thing, he's totally uneducated, right? And he's got people around him who are equally as uneducated. Just remember, 5 years of Samajwadi Party, average growth rate 6.9%. In Yogi Kal, double engine Sarkar, 1.9%, 1.9%. Berozgari up, crime against women up, rapes up, incidents of violence up. So hey, it is not hunky-dory for the good old Modi, Yogi, Nada in UP. And you get the picture, tells you a million stories, begging for votes. Shah door by door, दरवाजे के दरवाजे खटका के पर्चियां बांटो, ऐसे करके कोरोना काल में अपना कोरोना सब जगह घुमा रहे हैं. वाह, वाह, वाह. You have to look back at the democratic elected government of the country. जी हाँ सुनीलम जी, हमें लगता है हमारा समय भी समाप्त होने वाला. जी अपनी टिप्पणी करें. जी बस मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि पेगासस के अंदर क्योंकि अब फंसने की स्थिति आ गई और ये वाली बात साफ हो गई कि भारत सरकार ने ही जो है एक डील की थी और उसी डील के तहत जो है पूरे विपक्ष की और अपने ही कुछ लोगों की जासूसी कराई जा रही थी. तो अब उन्होंने फिर बयान दे दिया कि अभी तो इजराइल से और भी हथियार खरीदने हैं, मतलब $2 बिलियन के खरीदे थे और भी खरीदने हैं. इसका मतलब यह है कि अब कोई जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए. तो अब ये बातें सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो बात ये है कि असल में जो पूरा परसेप्शन है, जो रवि जी ने या जो जैन साहब ने जो आंकड़े पूरे दिए हैं, वो आंकड़े तो हैं ही, लेकिन एक परसेप्शन ये बन गया है कि ये गवर्नेंस जानते नहीं है. और अखिलेश यादव के बारे में ये बन गया है कि ये गवर्नेंस जानता है और बढ़िया ढंग से ये प्रदेश को चला सकता है. तो ये जो एक छवि का जो मसला होता है, वो एक तरफ एक व्यक्ति की छवि जो है वो लार्जर देन लाइफ हो गई है और दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति की जो छवि है वो इतनी नीचे चली गई है कि चुनाव के अंदर जो लोकप्रियता है, और ये बात एकदम सही है कि हम लोग आप ही के इस चैनल के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भाई अखिलेश वर्सेस नरेंद्र मोदी होने वाला है, लेकिन जो है अब एकदम देख रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी एकदम सीन से गायब हैं. अब इसलिए गायब हैं कि लोगों को दिखने लगा है कि अब हार भाजपा ने स्वीकार कर ली है और हार स्वीकार करने के बाद में लोग कहेंगे कि भाई मोदी हार गए, इसलिए वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं योगी हार गए. और लोग तो जो है वोट जो है विधानसभा और लोकसभा के अंदर अलग अलग वोट देने का काम करते हैं. मेरा कहना यह है कि परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूरे देश की राजनीति के अंदर आप जो है इसके
आप सब लोगों ने पिछली वीडियो से सुनी होगी, जिससे आपको महसूस होगा कि जो हवा अब चल रही है यूपी में, और वो पश्चिम से शुरू होने वाली है, और जिस प्रकार से वो चल रही है बीजेपी की विरोध में, लगता है कि जब तक वो पूरब में पहुंचेगी वो तो एक किस्म का तूफान बनने वाली है। अब वो मेरा कहना है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ। दूसरा, ये जो डिबेट मांगा है अखिलेश ने, अब देखो शाह साहब क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। क्या वो पतली गली से भाग जाएंगे? पर वो आपको बताएगा। और जैसे आपकी पहली वीडियो में भी देखा है कि मोदी जी जिस प्रकार से पूरा प्रभावी हो चुके थे बंगाल में, अब यूपी में नजर ही नहीं आ रहे, गोवा में भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये सोचते हैं कि वो हारने वाले हैं? और अब अगर हारने वाले हैं तो क्या वो अब ये कोशिश है कि उनके दरवाजे पे आके ये हार का मुकाम ना पहुंचे। But here you see this. While good old what's his name Jay and Viru की जोड़ी जो अब कहरी जा रही है between Akhilesh and Jayant is going from strength to strength and only talking about muddas and about schemes. What does the other side have to say? 21 Brahmin, 20 OBCs and BJP's 7th list of 91 UP candidates back to caste, and they say they're a casteless party. From red caps to riots to March 10th, Yogi ups the heat. Triple talaq, Ram temple decisions prove BJP fulfills promises as Nada Yara. So guys, nothing to do with economics, nothing to do with Rozgar, but triple talaq and Ram Mandir. So I told you, Deoband in tow, Shah invokes safety claims, false riot case. Like I said, tickets given to riots accused, Yogi intensifies attacks on opposition. He got nothing else, man. Consolidation of Muslim, Hindu vote in focus. Oh. But this is the reality. BJP candidates face black flags, stones, mud in Western UP FIR file. I'm telling you, folks, it ain't happening. It ain't happening. MLA Sangeet Som popular, but SP R&D tie-up is boosting rivals like nothing before. Like nothing before. But this is what they're all about, right? After threats, Dalit man's wedding procession escorted by MP police, taking a page, thank God, for the Rajasthan police. 10 candidates from Captain's Party choose to contest under BJP's Lotus symbol. What a shame for Captain Saab. Need to choose between BJP's Golden Goa and Gandhi Parivar ka Goa. Gandhi Parivar ka Goa? Oh, really? Oh, really? Centre deliberately misled House, says Congress. It absolutely did. Harness Channi appeal amongst Dalits, inputs to Congress suggested. Congress leaning towards making Channi CM face. Channi is their only chance against the rampaging Aam Aadmi. Forget the Akalis and forget the BJP and Amrinder Singh. Cheers. छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। और अराजकता करना गलत है तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है। काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3000 हमको देना है, 5000 देना है, 3000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का? रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को बेच दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। पकौड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को पकौड़ा तोलने दीजिएगा अच्छा लगता है? बताइए, ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि पांचवा तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग 5वीं तक पढ़ते हैं, पकौड़ा तलते कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? अभी अश्विनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें? थोड़ा ये भी सोचिए, कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले एक सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले एक सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा। नियत नहीं बदलिएगा तो बदलने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए। पेट का लात बहुत 600 साल का रिश्ता था, साल भर पहले वे आतंकवादी और मवाली थे। आज वे रिश्ता हो गया, आज उन्हें जरूरत है, आज आ लिए। कल जरूरत नहीं थी, कल हम मवाली थे, आतंकवादी थे। ये सब समझ गए ये बात, ये नहीं चल रहा है। तूने इसका असर देखो, जहाँ तक वोट बैंक की बात बता रहे, दंगे की बात बता रहे। अब जैसे वे यहाँ पे आए हैं, देश का गृह मंत्री एक विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा, आप इससे जान सकते हैं कि कोई उनका कितना जनमत यहाँ शेष बचा। डोर टू डोर फिर रहे, कहीं के लिए फिर रहे, क्यों फिर रहे? 5 साल में भी याद आएगा मुजफ्फरनगर।
शहरी जगह जा रही है। जब वोट लेने का समय आया तो घर घर पर्चे बांटे जा रहे और वो कह रहे कि जाटों का 650 का हमारा साल पुराना रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता जब वहाँ किसान मर रहे थे, लट बज रहे थे, उनके रास्ते रोके जा रहे थे, वहाँ कील गाड़ी जा रही थी, दीवार खड़ी की गई थी, तो तब कोई किसान जाट नेता, किसान आज बीजेपी में जाट नेता है, एक भी वहाँ जाके खड़ा जी इनका बार धरना ये बता रहे जी हिंदू खतरे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी खतरे में। अजी जी मैं धोरे पैसा दे लो होगा खवे पियांगे, नू तो हमें कोई पड़ोसी भी छेद देगा जी, मारे गात में दम होगा तो सामना पड़ोसी भी ना खावे जी, हमारी डम को बात खत्म। अरे तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इतना विकास हुआ है इस राज्य में, मंदिर बन रहा है, पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पे खर्चा होता था, अब तो देखो आपके जो धार्मिक केंद्र हैं वहाँ काम हो रहा है, वहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, मथुरा की भी तैयारी है। इससे मेरी व्यवस्था बदल जाएगी क्या जी? जी यहाँ बेरोजगारी इतनी हो जाएगी, मंदिर में मैं सारा दिन बैठा रहा जाकर, भगवान मुझे रोटी नहीं खाने का। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में थे। मुजफ्फरनगर में लोगों से मिले, भाषण दिया, डोर टू डोर कैंपेन किया और अपने भाषण में वही कैसेट बजाया जो कैसेट बीजेपी बार बार बजाकर 3 बार चुनाव जीत चुकी है। वो कैसेट है ध्रुवीकरण का, दंगों की याद दिलाने का, ये डर कि अगर आपने बीजेपी को नहीं चुना, बीजेपी की झोली वोटों से नहीं भरी तो एक बार फिर से दंगाई आपका जीना हराम कर देंगे। अमित शाह ऐसी बातें कहते रहे, उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और उसके बाद रवानगी के पहले ये पिच तैयार करके जाने की कोशिश थी कि मुजफ्फरनगर के लोग, आसपास के लोग उन दंगों को न भूलें और बीजेपी को जिताकर बीजेपी की झोली भरकर एक बार फिर से लखनऊ की गद्दी पर सत्ता नशी करें। मैं अभी हूं मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के शोरम गांव में। As you can see the previous video, you've got to also see what's happening in Bihar and what's been happening to the students, and it's just pathetic, right? And this debate, if there is a debate between Akhilesh and the Home Minister, there will be brilliant, because doodh ka doodh aur pani ka pani ho jayega. Not only about law and order, it's also about economics. I think Akhilesh is far more talented to give all those figures, maybe it's Akhilesh versus Modi, who knows, right? But here's where you know how good you are, like people who keep talking about culture. This is US varsity systems trustee vote to include caste as protected category. And this is happening in the state university system of California, guys. California. Where are my Californian Vedic guys? Where are they? Let's see. Yeah? Modi's cast of characters. This is written by Sanjay Barua. PM's reshuffle was primarily driven by social calculus. It was ironic that a party defined by the ideology of Hindutva that rose to power seeking to unite the Hindu majority against the divisive politics of caste identity pursued by its opponent should draw the media's attention to the fact that the new council would have 12 ministers belonging to scheduled castes, 8 to scheduled tribes and 27 OBCs. Hey, what come? The reshuffle is shaped less by the requirements of 2024 election strategy and more by the needs of provincial elections during the interim. In Lok Sabha elections, Modi has deployed very different firepower and he does not as yet have a national adversary of any consequences to worry about. He's got Pegasus, folks. He's got Pegasus. He's got this train running down, freight train running down at him, folks. And let me just say this, right? That calculus that he deployed for these provincial elections has broken down completely. A heavier hand by Aditi Pradhan and Avindra Khare. A recent report, Drunk on Power study of excise policing in Madhya Pradesh by the Criminal Justice and Police Accountability Project found more than half of all accused belong to oppressed Dalit, Adivasis, Bahujan communities, which is Vimukta, denoted tribes, communities such as the Kanjars and Kuch Bandiyas previously criminalized under the colonial era Criminal Tribes Act 1871 were arrested in disproportionate numbers. This is what you talk about one Hindu unity. And then you have this, folks, the case for a liberal democracy written by Raghuram Rajan and Rohit Lamba. Once again, though, our democracy and our economy need course correction. Credible journalists and academics describe the recent decay of range of democratic institutions, be they parliament, the judiciary, the election commission, academia, even the arts. Misguided attempts to associate the national political consciousness with a centralized Hindu identity is alienating our religious minorities, thereby dividing and weakening the country. The difficult political environment is mirrored in a lost decade for their economy. Lost decade, folks.
Once again, a liberal democracy can also allow us to confront this narrative with persuasive alternatives that aim to improve our economic well-being while preserving a strong, open society that takes pride in our culture and our nation. Jai Hind, folks. Jai Hind.